sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r as shown in the figure. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that rest part of the sphere about the y-axis is. So बच्चों, first of all, the moment of inertia of the whole sphere with respect to y-axis, we may write I whole is equal to 2 by 5. Let we assume mass of the sphere is the m and radius is a 2r. So 2 by 5 m into 2r square, square of the 2 4, 4 2s are 8. So this will become 8 by 5 m r square. Now suppose mass of the smaller sphere जो r radius का है which we are cutting from the larger sphere is suppose m dash, and we want to find out moment of inertia of the smaller sphere. So let me write m dash is the mass of the small sphere, मास ऑफ द स्मॉलर स्फीयर. और बच्चों स्मॉलर स्फीयर की रेडियस है r. r इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर. और ये स्मॉलर स्फीयर हम लार्जर स्फीयर में से कट करने वाले हैं. नाउ बच्चों, फॉर द सॉलिड स्फीयर we may write mass m is equal to density multiplied by the volume. So rho into v, and as I बच्चों I will write rho into v यानी कि rho volume means 4 by 3 pi r cube. But in our case density is the same. 4 by 3 pi is constant. So we may write m proportional to r cube. And as बच्चों we may write m proportional to r cube, then mass of the smaller sphere upon mass of the whole sphere is equal to r upon 2r all cube. So I may write mass of the smaller sphere, let we say m, mass of the larger sphere capital M, r cancel, so 1 by 2 क्यूब यानी कि 1 by 8. सो स्मॉलर स्फीयर का मास हो जाएगा m इज इक्वल टू m अपॉन 8. नाउ बच्चों लेट वी फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर. तो फिर स्मॉलर स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू. अब बच्चों ध्यान देना, we are gonna use here for according to y-axis we are gonna use parallel axis theorem. Smaller sphere की radius है r. So we may write for the smaller sphere 2 by 5, इसका मास है small m, रेडियस है r यानी 2 by 5 m r स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थियरम यानी कि m r स्क्वायर. Now I will put the data 2 by 5, m यानी कि कैपिटल M upon 8. कैपिटल M is the mass of the larger sphere r square plus कैपिटल M by 8 r square. Now बच्चों यहाँ पे m upon 8 r square is a common out. So in the bracket I may write 2 by 5 plus 1. So बच्चों ये आंसर हो जाएगा 2 by 5 plus 1 यानी कि 7 by 5. So 7 m r square upon 40. This is the moment of inertia of the smaller sphere. Now बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, we are having moment of inertia of the whole sphere, we are having moment of inertia of the smaller sphere. In the question they are asking us that we have to take the ratio of the moment of inertia of smaller sphere to the rest part यानी कि remaining sphere. So let me write down, we want to get this ratio
moment of inertia of smaller sphere upon moment of inertia of remaining sphere। तो बच्चों स्मॉलर स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? वी आर हैविंग 7/40 mr² एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिमेनिंग स्फीयर, पूरे का पूरे स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या थी हमारे पास? सो वी आर हैविंग द वैल्यू 8/5 mr²। सो ये हो जाएगा 8/5 mr² माइनस आई विल सब्ट्रैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर यानी कि 7/40 mr²। नाउ बच्चों हियर mr² will be cancel out. So I will write 7/40 upon, as I will take the LCM, 48 is 320 minus 7 5 is 35 upon 40 into 5. So once again here 40 will be cancel out. So this will become 7 into 5 अपॉन 320 माइनस 35, ये हो जाएगा 285। नाउ बच्चों 5 5 ज़ा 25, सो 35 यानी कि 5 7 ज़ा, सो अवर फाइनल आंसर विल बिकम 7/57। दिस विल बी द फाइनल आंसर। लेट वी चेक। सो बच्चों हियर ऑप्शन नंबर सी 7/57 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों?